एम्पैथी वाज अ टर्म जो बहुत ज़्यादा कॉलेज में यूज़ हुआ, एंड आई ऑलवेज हेटेड इट कि यार एम्पैथी करते रहते हैं, एम्पैथाइज तो करते नहीं है, ठीक है। और मैं तो बिल्कुल डेड हूँ अंदर से, मेडिसिन चल रही है, सब चल रहा है, तो फिर वैसे भी कुछ फील नहीं होता, तो कैसे एम्पैथाइज करें। देन आई स्टार्टेड डिस्कनेक्टिंग माई एम्पैथी विद माई इमोशंस, एंड आई स्टार्ट टेकिंग इट मोर लाइक अ कैसे किसी प्रॉब्लम स्पेस के साथ में एम्पैथाइज करना है। देन आई स्टार्टेड एम्पैथाइजिंग विद माई सेल्फ, कैसे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल घर में प्रॉब्लम्स को मैंने ढूंढना स्टार्ट किया। जैसे कॉलेज के अंदर मैं शिफ्ट हुआ था, तो घर में फर्नीचर की प्रॉब्लम थी, फर्नीचर नहीं था। दैन व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन फर्नीचर कि यार फर्नीचर भी कैसा चाहिए, सब लोग आते हैं, सब बैठते हैं, नीचे बैठ के खाने वाला होना चाहिए। तो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट जापानीज फर्नीचर, आई फॉरगॉट द नेम, एंड देन आई क्रिएटेड माई ओन फर्नीचर और उसको रखा। तो ये ऐसे मैंने खुद के साथ एम्पैथाइज करना स्टार्ट किया कि यार ये प्रॉब्लम है, एंड दिस इज़ हाउ आई नीड टू एम्पैथाइज। फॉर एग्जांपल अगर मेरा बैकपैक बहुत हैवी था, तो आई स्टार्टेड आइडिएटिंग ऑन द बैकपैक कि यार कैसे इसको बहुत लाइट बनाएं, कैसे इसको मेरे अकॉर्डिंग बनाएं कि एक कस्टम लेवल का बैकपैक हो कि मैं ट्रैवल बहुत लाइटली कर पाऊँ। सो अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने एम्पैथाइज करना स्टार्ट किया। इफ़ यू कैन एम्पैथाइज विद अदर पीपल, यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। यू कैन गो टू योर mom's kitchen, you can talk to dad and see what kind of problem they are facing. It's not, and problem is not a problem. I just had a talk with a guy. So problem is not a problem, it's a problem space. So problem space can be anything. It can be something which you cannot define, but it is there, right? A blank table can be a problem, and when you're putting stuff on a blank table, you're finding a solution. That means it's not blank anymore. That's a problem space. That's the thing what I'm talking about. That's a problem space. So how you going to find a beautiful problem? You will find through empathizing. When you empathize with yourself, when you go out and empathize with your environment, that's the empathy I'm talking about, right? I don't know how what's the standard definition of it, but this is how I started empathizing, because I was able to relate to myself more in terms of creating stuff, to make my life easier to live, and to make products which go with my ideologies, which is living with a small backpack and having a freedom to go anywhere. So I created a system which work with that ideology. So I started making a small backpack. I started making devices, or carry-on pouches, or started changing my gears. How can I create a system which will go with the minimal style of my living, right? So that's how you can empathize. I'm not talking about sympathy, remember that, it's empathy. And empathy will help you to find beautiful problem spaces or opportunities, जहाँ पे तुम actually you can create a solution, substantial solution. So use empathy in your work whenever you are trying to find a problem and you cannot find a problem. कई बार होता है कि नहीं मिलती है प्रॉब्लम, राइट? ट्राई टू एम्पैथाइज विद द वर्ल्ड. तुम राइडर हो, राइट? फॉर एग्जांपल यू आर अ बाइक राइडर, ओके. एक प्रॉब्लम हमेशा मैं फेस करता हूँ कि यार बैक रैक नहीं है, वो बैक रैक बहुत छोटा सा है. तो आई स्टार्ट रिसर्चिंग, तो आई फाउंड आउट about this particular thing, which is a sissy bar. So sissy bar is a long bar which you can put on your bike. So it's a project, but that's how I'm empathizing with my back, and that's what I'm creating around that problem, a solution around that problem, which will solve my back problem. I can put my rucksack on it, and that's it. I can go anywhere. I can live on a motorcycle. So that's how you are going to empathize, and that empathy will lead you to problem finding. Once you find a problem, then we will talk about how to go to solution. So this is problem, then next video I'm going to talk about the solution. Yeah.